Okay. Yes, I'm sorry for that inconvenience. We shall be starting from here only. So we have discussed the last question in that was about the Kyoto Protocol, that it was the wrong statement over there, that it was signed in 1995 rather than it was signed in 1997. So we got with that this the first statement is not true about it. Okay. Now the next one. Which among the following is correct about virtual communities? Virtual communities के regarding में कौन सा statement सही है? So they are self-defined electronic network of interactive communities organized around a shared interest. ये self-defined electronic network हैं interactive communities के जो organize होते हैं shared interest में. Then shared communities may be relatively formalized or spontaneously formed by social network. They have a specific rules and dynamics. Like the physical personal network, most virtual communities are specialized and diversified. So ये चारों ऑप्शन सही है हमारे लिए. ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer, that is A, B and C, D. So that is for the question ID 793. Okay. Now we shall be going for the next one, that is here we are having a system and the locations. हमारे क्या क्या आ जाते हैं अब जो various other type of systems हैं and the location. ये जो systems हैं और इनकी locations कहाँ कहाँ पे हैं, ये systems कहाँ कहाँ काम करते थे, right? हमने already discuss भी किया था इसको. that is रैयतवाड़ी कहाँ पे था, मद्रास में था. महलवाड़ी आगरा एंड अवध, right? जमींदारी is for Bengal and उत्तर प्रदेश and जागीरदारी is for princely states of Rajasthan, right? So ये इन दोनों स्टेट में फेमस था. Is it clear to everyone? So हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा, right? Okay. Then next one, it is for the 802. The question ID was 802. अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आईडी कौन सा है 792. 792 I think the many were saying that there was something wrong in 792. So 792 no, this is the correct one. This was not in the list. कि सोशल नेटवर्क ग्रुप में क्या है, राइट? कौन से इनमें से स्टेटमेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है सोशल नेटवर्क ग्रुप के. सो दे आर ऑफन कॉल्ड ऑनलाइन कम्युनिटीज़. इनको हम ऑनलाइन कम्युनिटीज़ भी बुलाते हैं. दे डू नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन. ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व नहीं करता है. दे में नॉट बी लोकल एंड बाउंड टू अ प्लेस. लोकल नहीं है, किसी भी प्लेस के लिए बाउंडेड नहीं है. दे जनरेट दे वो अपनी खुद की लैंग्वेज क्रिएट करते हैं. उनकी वैल्यूज़ रूल्स और नॉर्म्स खुद के होते हैं. दे गिव मेम्बर्स अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड एस्टीम. मेम्बर्स को अपनी खुद की सेल्फ और एस्टीम देते हैं. सो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आंसर क्वेश्चन नंबर 4 इज द करेक्ट. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. दैट इज A, B, C and D, E all are the correct characteristic for the social network group. social network group के सारे characteristics हैं, right? Is it clear to everyone? Now next is the question that is 765, that is the question number 68. Social construction theorists reject biological basics for gender differences. According to these theorists, social construction theorists के according जो उन्होंने rejections दिया है, किसके लिए reject किया है? biological basics for gender differences. तो इन theorists के हिसाब से कौन सा statement सही है? तो so gender identities emerge in relation to perceived sex difference in society in turn to help to shape those societies. So this is the correct answer. gender identity partially emerge नहीं होता है, emerge होता है relationship में किसको? sex differences देखने के लिए. तो यहाँ पे ये overall आ जाता है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है, उस सोसाइटीज़ में. फिर यहाँ पे ये डू नॉट इमर्ज है, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फिर इमर्ज इन रिलेशनशिप, ये क्या है? रिलेशन टू परसीव सेक्स डिफरेंस इन सोसाइटी. दैट टर्न डू नॉट इज़ अ रॉन्ग वन. सो यहाँ पे क्या है? हेल्प करता है उन सोसाइटीज़ को. सो दैट्स द रीज़न यहाँ पे ओवरऑल है, ठीक है. ये डू नॉट इमर्ज है, यहाँ पे डू नॉट हेल्प है. दैट्स वाई द थर्ड 3 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. इसलिए द फर्स्ट स्टेटमेंट्स द ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. ओके. अब हमारा आता है नेक्स्ट, दैट इज़ द सिंपलेस्ट पॉसिबल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन which is defined as the difference between values of extreme item of series are called. तो इनको हम क्या बोलते हैं? जो पॉसिबल मेजर्स और डिस्पर्शंस होते हैं, जिनको हम एक नॉर्मली वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम पे जो डिफर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मीन, मीडियन, मोड और रेंज. सो दिस इज रेंज, राइट? सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. Now let's get back to this 740, that if we add measurement error, अगर हम मेजरमेंट एरर या फिर नॉन सैम्पलिंग एरर ऐड करते हैं टू अ सैम्पलिंग एरर, किस में ऐड कर रहे हैं हम? सैम्पलिंग एरर में ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा?
विल गेट द टोटल एरर. सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. अगर हम मेजरिंग एरर और या फिर नॉन सैम्पलिंग एरर में सैम्पलिंग एरर ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, टोटल एरर मिलता है. ठीक है. सो 71 दैट इज़ दी. ओके, सो दिस इज 771. ये इस क्वेश्चन को हम चैलेंज करेंगे, राइट. सो यू कैन रिमेंबर दिस क्वेश्चन आईडी दैट इज 771. ठीक है, क्वेश्चन आईडी क्या है, 771 है. और इस क्वेश्चन को हमें क्यों चैलेंज करना है, हमारे जो अलग अलग टाइप के रेवोल्यूशन है, आईआईटी रेवोल्यूशन 1970 में हुआ था. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमारा है वो 1789 का है. बोल्शविक जो है वो 1923 का है. एंड देन द पैलेस रेवोल्यूशन इज फॉर 1792. अब आप मुझे बताओ, इसके हिसाब से BCAD तो होगा नहीं सही, होगा सही, ये तो हो नहीं सकता. सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले 1772 का पैलेस रेवोल्यूशन आ जाएगा D. फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, 1772 के बाद क्या आ जाता है हमारे पास, B, राइट. फिर 1789 का, देन बोल्शविक आ गया 23 का, देन हमारे पास कोड आ गया A 1970s का. तो ये हो गए हमारे, पर यहाँ पे ये ऑप्शन में D, B, C ये तो है नहीं. सो इसलिए हम 71 जो क्वेश्चन आईडी है उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो ये आंसर हमें, इस वाले क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो. सो बिकॉज ऑल द सोर्सेज हमने देख लिया, सारे सोर्सेज पे ये जो क्वेश्चन है वो हमें चैलेंज करना चाहिए, राइट. देन वी कैन गो फॉर दिस 795. अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एथनिक डिफरेंसेस हैव अ बेयरिंग ऑन सोशल कॉन्फ्लिक्ट. एथनिक जो डिफरेंसेस होते हैं वो किस के ऊपर बेयर करते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट पे. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्केल एंड इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हमें किस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को अंडरस्टैंड करना है एथनिक ग्रुप्स में, राइट. जो भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट्स है कोई भी एथनिक ग्रुप को लेके, या नंबर ऑफ फैक्टर्स जो भी हो रहे हैं, राइट. सो शुड बी टेकन इन टू द अकाउंट. दीज फैक्टर्स आर, ये जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, ये जो फैक्टर्स हैं वो है क्या. सो दैट इज ऑब्जेक्टिव डिफरेंस, इकोनॉमिक डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस, सोशल अवेयरनेस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज ऑब्जेक्टिव differences, social awareness and political organization. So here we are having question number 2 as a correct answer. Okay, next हमारा क्वेश्चन आ जाता है वो है, टेक्नोलॉजी शेप इज सोशली शेप्ड, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्टेटमेंट. टेक्नोलॉजी अगर सोशली शेप्ड होती है तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. तो टेक्नोलॉजी चेंजेस कंडीशन बाय सोशल फैक्टर, ये सही नहीं है. और द सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजी डिज़ाइन. टेक्नोलॉजी चेंज जो है वो क्या होता है, कंडीशन होती है बाय सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर से ही कंडीशन होती है. ठीक है. Then this is the technological design or the function are the outcome of social process rather than the internal standard of scientific technological rationality. Technology change follows a fixed linear path which can be explained rather than by internal standard of scientific technological rationality. Okay, then the technology change involve controversy, disagreement and the difficulties that engage relevant social group in strategy to shape technology. So here the third option is our wrong one. So third one is the wrong one. So option number 3 is the wrong one. Okay, rest all are the correct statement. Now we talk about the man lineage fellows are literally figuratively close to him, for they are after all the brothers who have separated their field and heart but who continue to sustain their fraternal lineage. This ambivalence take place because ये जो ambivalence है क्यों आता है, because the ideal of lineage solidarity is not so strongly proclaimed as is fraternal ideal. वो किससे होती है, इस वजह से वो इतना strongly हम उसको claim नहीं करते हैं. It is not always clear so that we should be counted as a full lineage member. वो हमेशा क्लियर नहीं है इसलिए हम उसको पूरी तरह से काउंट करते हैं. लीनेज टाइज जो होती हैं वो लैप्स होती हैं, कुछ जनरेशन्स के बाद वो लैप्स हो जाती हैं. जो भी मेंबर्स हैं ऑब्लिगेटेड जनरेशन्स के वो आज की डेट में स्पेसिफाइड नहीं है क्लियरली. देन वी कम अबाउट द फादर ब्रदर सन. वो अगर मूव कर जाते हैं डिसेंट विलेज से, मेंबर्स से, जो भी रिचुअल पर्पस है, राइट, वो फुली जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कोई भी कोऑपरेटिव एक्टिविटी है उस पर. ठीक है. यस. सो हियर वी आर हैविंग दैट
fourth. So this means all are the correct answer. A, B, C, D, E. All are the correct answers. Okay. Now we come about this, that is कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन. अब हम देखते हैं सिम्बॉलिक डोमिनेंस किसे बोलते हैं. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन ID 803. सिम्बॉलिक डोमिनेंस किसे बोलते हैं हम, सोशल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं, हैबिटस किसे बोलते हैं, कल्चरल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं. ठीक है. सो हियर सिम्बॉलिक डोमिनेंस क्या होता है, द एक्सरसाइज ऑफ डोमिनेंस थ्रू कल्चर एंड इट्स मिटिफिकेशन, दैट इज सिम्बॉलिक डोमिनेंस. सोशल रिप्रोडक्शन क्या है, दिस द मेंटेनेंस ऑफ पावर एंड प्रिविलेज बिटवीन सोशल क्लास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. सो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसको सोशल रिप्रोडक्शन बोलेंगे. ठीक है. हैबिटस क्या है, लर्न डिस्पोजिशन विच लीड टू पीपल टू बिहेव इन सर्टेन वे. हम कुछ ना कुछ तरीके से बिहेव करते हैं, दैट इज द हैबिटस. कल्चरल रिप्रोडक्शन हो गया एक प्रोसेस जो सोसाइटी में ट्रांसमिट करता है नॉलेज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे, दैट इज कॉल्ड कल्चरल रिप्रोडक्शन. ओके. So here we are having this next question कि C. वॉन फ्यूरर हेमिंटॉफ ने स्टडी किया है इंटेंसिवली फैमिली के स्ट्रक्चर्स और कल्चरल लाइफ नागास को. तो कौन से ग्रुप ऑफ नागा पे उन्होंने फोकस किया अपनी स्टडी में. सो ही हैज़ फोकस ऑन द कोनियक नागास. ओके. सो दैट इज द 462. द ID is 462 which he has focused on the Konyak Nagas. So option number 2. Who is associated with the concept of humane city. कौन associated है concept of humane city से, Richard Sennett is related to this concept of humane city. Okay, so this question is definitely the correct one. Next come among arrange the following work on gender studies in chronological order. chronological order में देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, sexual behavior in human male, that is the Alfred Kinsey. Then the transformation of intimacy, Anthony Giddens. Second is, third one is the paradox of gender, Judith Lauber. And the fourth one is masculinity, that is Rowan Connell. So here the correct answer is the first one. Okay. Now the type of societies and its features. Hunting and gathering is considered to be the few inequality differences of rank limited by age and gender, that is hunting and gathering. Okay. Agrarian societies stronger inequalities and ruled by chief based on small rural communities. ये वो societies है जहाँ पे inequalities होती हैं जो chiefs rule करते हैं, agriculture वाली है ना इसलिए. देन pastorals कौन सी हो गई है, जहाँ पे inequalities हैं, जो भी ruled होते हैं chief warrior king जो कि based होते हैं domestication या फिर कोई भी subsistence livelihood पे based होते हैं, that is pastoral. ओके. ट्रेडिशनल सोसाइटीज या सिविलाइजेशन हो गया जो बेस्ड होते हैं एग्रीकल्चर पे. डिस्टिंक्ट गवर्नमेंट एपरेटस जो कि किंग हेड करता है, दैट इज द डिस्टिंक्ट सोसाइटी. सो हियर वी हैव एन ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ओके. हु इज द बुक ऑथर ऑफ द बुक ट्राइब टू एम्पायर. ट्राइब टू एम्पायर के ऑथर कौन है, राइट. सो इट इज A. Morit and G. Davy. So option number 2 is the correct answer. Tribe to Empire के author हैं A. Morit and G. Davy. That is the second one. Okay. Now the characteristic. अब आपको बताने एक good sample design के characteristics क्या होते हैं. So it must result in truly representative sample. सच बात है भाई, अच्छा sample कैसा होना चाहिए, सच होना चाहिए, हम उसको represent कर सकते हैं. Then it must be such which result in small sampling error. Yes, it's correct. It must be variable in context of fund available for research study. Yes, it is available for the research study. It must be such so that systematic biases can be controlled in a better way. We can control a systematic bias in the better version. That is a good sample design, the characteristic for the good sample design. Okay. Yeah. Here also we have to arrange it in the chronological order. What we have to do, यहाँ पे हमें इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है. फर्स्ट क्या है हमारा, सोशल क्लास इन अमेरिका बाय L. Warner इज द फर्स्ट वन. सेकंड इज द क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी R. Dandidoff. Then political power and social class is the third one. And the fourth one is the social class and stratification by P. Saunders. That is the fourth one. So this is the option number 2. B, D, C, A is the correct answer for this. Okay.
Here we are having 728, that is the question ID is 728, the question number 83, that is just a minute. A social science having as main focus to study of social institution brought into being by the industrial transformation of past 2 or 3 centuries. It involves historical, anthropological and critical sensitivity. Who has explained this? किसने बोला है कि सोशल साइंस एक हमारा मेन फोकस होता है स्टडी करने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशंस में, जो कि इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है कोई पास्ट 2 to 3 centuries में. जो in what does it involve? Which involves historical, anthropological and creative sensitivity. Who has explained this? This is explained by Anthony Giddens. So the answer number 4 is the correct answer for this. The origins of hermeneutics philosophy in the modern age and most appropriately attributed to. सो ये किसको हमने फिलोसफी दी है मॉडर्न एज की? दैट इज सिल्च मैचर्स को. ठीक है, इट इज़ द 738. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. Here we are having the books and the authors. Okay, so name the books and the authors who has written this. So New Rules for Sociological Method is by Anthony Giddens. Phenomenology of Social World is by the Alfred Schutz. Study in the Ethnomethodology is by the Harold Garfinkel, and the Idea of Social Sciences by the Peter Winch. So in this way we are having option number 2 is the correct answer. So it is the quote number 801. According to R.K. Mukherjee, Mark Mukherjee is an Indian thinker. Indian culture is very well blended with various religion texts. He emphasis on the spirit of tolerance and diversity is reflected in. तो वो आर के मुखर्जी ने इंडियन कल्चर्स में उन्होंने क्या किया है, अलग अलग टेक्स्ट के बारे में डिस्कशन किया है. उन्होंने देखा हुआ है उन्होंने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया है, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस जो अलग अलग डाइवर्सिटी में होती है किस चीज़ में, धर्मशास्त्र में. ठीक है, सो 766 द IT is the fourth one is the correct answer. Okay, the option number 4. Now who gave the example of developed system of administration of justice particularly among African Negroes में किसने एग्जाम्पल दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का? सो दैट इज बाय R.H. लोई. ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन. इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन हम किसे बोलते हैं? जहाँ पे हम बिजनेस को एज यूजुअल एक्सेप्ट करते हैं, no longer possible, but also reject radical environmentalist solution involving deindustrialization. जहाँ पे हम radical environmentalist solutions को रिजेक्ट करते हैं बट इन्वॉल्व करते हैं deindustrialization को, दैट इज इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? या देन सोशोलॉजी ऑफ कंजम्पशन क्या होता है? वो एम्फेसाइज करता है कॉम्बिनेशन किस चीज़ पे? इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म पे, जो ट्रांसफॉर्म करता है सोसाइटी और एनवायरनमेंट के रिलेशन को. क्रिटिकल रियलिज्म क्या है? वो अप्रोचेज उस एनवायरमेंटल इश्यूज एक साइंटिफिक वे में रहते हैं या हम उनको साथ में लेके आते हैं कोई भी एविडेंस विच केम अक्रॉस द सोशल एंड नेचुरल साइंसेज टू अंडरस्टैंड वाई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होता है, क्यों एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम अकर होती है. दैट इज क्रिटिकल रियलिज्म. सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म क्या है? अप्रोचेस विच इन्वेस्टिगेट हाउ सम एनवायरमेंटल इशू कम टू बी सीन as significant and in need of urgent action while other are largely involved. जो भी other है वो involved नहीं होते हैं. So that is the social constructionism. Okay, so we are having an option number 2 as a correct one. Now the book and authors. Magic, Science and Religion किसकी बुक है? अभी हमने थोड़ी देर अभी फाउंडेशन क्लास में देखा है किसकी बुक थी? Malinowski. ठीक है, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी इज बाय द कार्ल मार्क्स. यस, स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड इज बाय अल्फ्रेड शूट्स एंड थॉमस लुकमैन. माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इज बाय G.H. मीड.
So here we are having option number 2 is the correct answer for. Okay. Then arrange the following sociological work on postmodernism in chronological order of their publication. हमें से chronological order में arrange करना है. Postmodern and condition by G.F. Lyotard is the first one. Second is the condition of postmodernity by D. Harvey. Okay. Image of postmodernism society is the third one, that is by N.K. Deason. And the postmodernism reason and religion by G. E. Jelner, that is by the fourth one. Okay. So here we are having the fourth option is the correct one. We have to arrange them in the chronological order. Okay. Now we come for the, according to Manuel Castle, the rise of new global information economy is accompanied with emergence of new network enterprise. Which among the following is not a characteristic of network enterprise? Flexible production and new management is the characteristic. An organization based on vertical model is the characteristic. Fundamental components of organization is the series of network is the characteristic. So मेरे पास ना बहुत सारे लोगों के डाउट्स आए थे इसमें कि देयर वाज मैं देख रही थी कि 733 क्वेश्चंस पे बहुत सारे डाउट्स थे, राइट, कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो बेस्ड है वो हॉरिजॉन्टल मॉडल पे है या फिर आपका वर्टिकल मॉडल पे है. सो आप देखो इसको जो 733 जो आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आईडी ये 733 इज़ टू बी चैलेंज, क्योंकि ये हमारा जो है ये इसके ऊपर मैं और भी देख लूँगी, बट अकॉर्डिंगली अभी हमें मुझे जो रेफरेंसेस मिले थे उसमें सेकंड वाज कंसिडर्ड टू बी अ करेक्ट वन, राइट, बिकॉज जो मैनुअल कैसल की जो बुक है उसमें वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की हुई है एंड द ऑर्गेनाइजेशन वाज बेस्ड ऑन दी वेरियस हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, राइट. सो कॉन्सेप्ट जो उनकी नेटवर्क ऑफ राइट सोसाइटी है उसको उसके रिलेशन में I'll share you the source also for 733. So we'll mark it for the preference, right. हम इसको mark करके रखते हैं. So we'll check it. If you all are having any kind of sources, so हम इसको check कर लेंगे, right. Is it clear? Then चलते हैं हम next पे, that is the method developer in example. जो किसने कौन सा मेथड डेवलप किया है उनके अकॉर्डिंगली हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हम क्लस्टर एनालिसिस करते हैं. देन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज यूज फॉर द ची स्क्वायर टेस्ट. सेंट्रल टेंडेंसीज फॉर द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कार्ल पियर्सन का मेथड है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस. सो हियर वी गेट द ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर द ID 800. ओके. In the Tibetan kinship system, there is an existence of fraternal polyandry. What are the premises of the system? अगर Tibetan kinship system में देखोगे तो वहाँ पे existence है fraternal polyandry. क्या premises हैं system के? So there are several brothers sharing a wife. Age of range of brothers is often large. So age है brothers की वो बहुत बड़ी है, ठीक है. Elder brother is in the control as much as father is. Eldest जो brother होता है वो control में होता है जैसे father होते हैं, right. Regulated sexual access within the family. Within the family में access होता है. No regulated sexual action within the family. This would be the wrong. So in this case we have A, B, C, D is the correct answer. Okay, 793. 90 is the third one. 778 जो है ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ना मुझे चारों ऑप्शन सही लग रहे थे, मैंने ये आपको मैं ये सोर्स शेयर कर दूँगी, क्योंकि जो सोशलाइजेशन है ना वो कंसिडर किया जाता है इसमें, जो इन्होंने कंसिडर लिटिल और नो रूम फॉर क्रिएटिविटी. सो दिस 778 कैन बी चैलेंज. ओके, इन दिस वे ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, सो जो 778 वाला जो है वो आप चैलेंज कर सकते हो एंड शेयर यू द सोर्स ऑल्सो. So socialization process होता है, norm values of system are internalized and became yet part of actor conscience. Socialization is a part conservative process in which need disposition bind children to the social system. Parsons see socialization as a lifelong process, and in socialization process there is a little or no room for creativity. So according to me there is a all four are correct. Okay, मेरे according, because आपको मैं reference भी दिखा, like I can tell you the reference, just give me a minute. देखो
सोशलाइजेशन जो है ना, अगर इफ़ यू विल बी लाइक, यू कैन डाउनलोड भी कर सकते हो आप, इंटरनेट पे देखोगे तो वहाँ पे आपको लाइन मिलेगी दैट सोशलाइजेशन इज अ कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज अ कंजर्वेटिव प्रोसेस इन विच द नीड एंड डिस्पोजिशन बाइंड चिल्ड्रन टू अ सोशल सिस्टम. There is a little or no room for creativity. So the need gratification ties children to the system as it exists. Parson sees socialization as a lifelong process. So all these statements were there, so this can be challenged. Now the term refers to movement away from residential location either within the same country और another country. This is not a immigration. ये immigration तो नहीं है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया. 748 जो है वो इनके अकॉर्डिंग दिस इज इमिग्रेशन, राइट, इनके अकॉर्डिंग. सो दिस इज रॉन्ग, इट इज़ इमिग्रेशन. ओके. सो क्योंकि देखो आपको अगर आप देखोगे देयर वुड बी अ सोर्सेज ऑल्सो. आप देखो अगर इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में अंतर है, राइट. इमिग्रेशन जो होता है into a country from another country, right. करेक्टली इसकी डेफिनेशन है into a country from another country. एंड इमिग्रेशन जो होता है वो रिफर होता है माइग्रेशन आउट ऑफ अ कंट्री, राइट. सो यहाँ पे क्या है, रेजिडेंट लोकेशन इधर विद इन द सेम कंट्री टू अनदर कंट्री. तो इमिग्रेशन इज कम्प्लीटली रूल्ड आउट. ये रूल्ड आउट हो सकता है, राइट. इमिग्रेशन जो है वो कम्प्लीटली रूल्ड आउट है. इज इट क्लियर. सो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा आपका. ये जो आंसर है इमिग्रेशन, जो इनके अकॉर्डिंग जो आंसर बताया है उन्होंने, ये तो गलत ही हो जाएगा. सो इट विल बी नॉट इमिग्रेशन. इमिग्रेशन सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग. सो आप ये वाला आंसर जो है 95, ये आप चैलेंज कर सकते हो. दैट इज़ 748. ये आप चैलेंज कर सकते हो. सेकेंड वन जो इनके अकॉर्डिंग एनटीए के अकॉर्डिंग है, दैट इज़ दी रॉन्ग बिकॉज इट वुड बी अ इमिग्रेशन. ये है इन टू द कंट्री विदाउट फ्रॉम अनदर कंट्री. दूसरे कंट्री से हम आते हैं तो दैट इज़ इमिग्रेशन. ओके. सो रेजिडेंशियल लोकेशन पे जब हमारा जो सेम कंट्री पे होता है. इज इट क्लियर. Now, who coined the term ethnocentrism? So W.G. Sumner, option number 1 is the correct. 743 is the correct one. W.G. Sumner ने coin किया ये term. Then elementary form of religion life, Emile Durkheim refutes करते हैं 729 में. Comtean epistemology as it based on idealistic and aphoristic assumption, ये है. और Hegelian epistemology as it based on the idealistic and aphoristic assumption. और Weberian. So it's बताओ किसके ऊपर. So it's a Kantian epistemology पे based थे, ठीक है. So option number 4, 97 का 4 आंसर करेक्ट है. Then we talk about who has theorized the triumph of capitalist democracy in Cold War, thus the end of history. सो फ्रैंकिस फुकुयामा ने किया था. थ्योरी दी हुई थी, ठीक है, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी कोल्ड वॉर के समय. दैट इज फ्रैंकिस फुकुयामा. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. 734, which of the among the following is not true about Weber motion of Wollstonecraft. So I think this is the correct one which they have mentioned, that the second one. ये नहीं है, राइट. रेस्ट ऑल वेबर जो वेस्टिंगहैम है वो रैशनल प्रोसीजर है स्टडी का, वेस्टिंगहैम इन्वॉल्व करता है. सो दिस इज़ द रॉन्ग वन. देन रेस्ट ऑल आर द करेक्ट. वेस्टिंगहैम इन्वॉल्व करते हैं, सिस्टमैटिक और रिगरस रिसर्च होती है. वेस्टिंगहैम में हम फील्ड ये जो है वो हर्मेनेटिक्स के फील्ड में जाना जाता है, बट ये सिंपली हम इंट्यूशन और सिंपैथिक पार्टिसिपेशन रिसर्चर्स के बेस में इसको यूज़ नहीं करते हैं. सो 99 सेकेंड वुड बी द रॉन्ग आंसर. यस, ये 774 है. अब देखो इसमें ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया है. अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ये एक्ट है या कौन से ईयर में अमेंडेड हुआ है, तो हमें ये नहीं पता हमें किस ऑर्डर में अरेंज करना है. तो ये तो क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो एज इफ दे हैव सी. आप देख सकते हो कि हिंदू वुमेन सेपरेशन और रेजिडेंस मेंटेनेंस एक्ट है वो 1946 में अमेंड हुआ था 1956 में, ठीक है. फिर पारसी मैरिज डिवोर्स एक्ट है 1936 का, अमेंड हुआ 1988 में. कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850 का है जो अब तो है ही नहीं. इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 का अमेंड किया था हमने 2001 में. हिंदू इनहेरिटेंस 1928 का अमेंड किया हमने 1997 में. सो इसके अकॉर्डिंग दिस इज़ द रॉन्ग, राइट. सो आप इसको चैलेंज कर सकते हो. अगर आप अरेंज भी करोगे
अगर आप देखो तो सबसे पहले आप किसको कंसिडर करोगे, सी करोगे सबसे पहले कंसिडर 1850 का, राइट। फिर उसके बाद क्या कंसिडर करोगे, डी करोगे, राइट। फिर डी के बाद आप कहाँ किस पे जाओगे, सबसे पहले 1928 ई पे जाओगे, राइट। अगर आप एक्स देखते हो तो फिर उसके बाद आपका बी होगा, फिर आपका ए होगा, अगर ये वाला ऑर्डर है तो, ठीक है। फिर अगर आप अमेंडमेंट के ऑर्डर में जाओगे तो अब देखो इसका तो सी का तो हमारे पास कोई वही नहीं है कि कब अमेंड हुआ, तो सी तो आप छोड़ दोगे, ठीक है। यस, अमेंडमेंट के ऑर्डर में तो सबसे पहले कौन सा हो रहा है, ए हो रहा है 1956, राइट। फिर बी है, नहीं ई है, नो 1977 है, फिर बी है, राइट 1988, फिर आपका ई है, फिर आपका क्या आ जाता है 1997 ई है, फिर उसके बाद डी। तो बट उसमें एक तो अभी भी मिसिंग ही है ना, सो दिस कैन बी चैलेंज, ओके। 774 वाला आप चैलेंज कर सकते हो। अब आता है 788, 788 इज़ ऑल्सो करेक्ट आई थिंक, यहाँ पे तो मैंने तो नहीं किया हुआ है, हमने मैनुअल कैसल्स का नेटवर्क वाला देख लिया जो कि हॉरिजॉन्टल के बेसिस पे 733, राइट। हाँ, माइग्रेशन वाला तो आई थिंक हो गया ना, हमने देख लिया ना, इमिग्रेशन माइग्रेशन। तो यहाँ पे ये जो टर्म है वो माइग्रेशन रेफर करता है ना, ये जो टर्म है ये क्या टर्म रेफर कर रहा है, माइग्रेशन कर रहा है ना, क्योंकि हम रेजिडेंशियल लोकेशन सेम कंट्री में, ये तो इनटू द कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, इमिग्रेशन तो है ही नहीं, सो दैट इज डन, ओके। Which of the following is not true about the ecocentric view to address environmental issue? कौन सा सही नहीं है? So they see economic growth at odds to add with environmental objective. वो economic growth को as a odd देखते हैं environmental objective में, right? Then they believe that by adopting scientific and technical solution environmental issue can be addressed. जो उनका मानना है कि जो भी हमारा solution है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन इन्वायरमेंटल इशूज़ को एड्रेस कर सकता है, ठीक है। फिर दे बिलीव दैट देयर मस्ट बी अ लिमिट टू ग्रोथ, उनका मानना है कि लिमिट टू ग्रोथ होगा। दे आर्ग्यू दैट द प्लैनेट इज़ नॉट जस्ट फॉर ह्यूमन बट फॉर द लिविंग थिंग। तो इस हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंसेस किसको दी है यहाँ पे, मतलब लिविंग नेचुरल बींग्स को नहीं दी है। सो दैट इज़ वाई ये जो ए सी और डी हमारा गलत हो जाएगा। ओनली द ऑप्शन नंबर दिस इज who argued that urbanism promote diverse subcultures rather than submerging everyone within the anonymous mass। किसके अकॉर्डिंग, फिशर के अकॉर्डिंग था कि उन्होंने अर्बनिज्म को प्रमोट किया है डाइवर्स सबकल्चर्स में जो सब इमर्जिंग एवरीवन विद द एनोनिमस मास। सो 747 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ लेफ्ट राइट पार्टी डिविजन रिफ्लेक्ट, लेफ्ट राइट जो पार्टी डिविजन को रिफ्लेक्ट करती क्लास डिविजन कैपिटल सोसाइटी में। दिस व्यू इज क्रिटिसाइज्ड बाय टी.बी. बॉटमूर, कौन से आर्ग्यूमेंट्स में, बाय पार्टीज आर अलायंस बिटवीन वेराइटीज ऑफ डिस्टिंक्टिव ग्रुप विद डाइवर्जेंट इंटरेस्ट। Political parties are relatively autonomous from their class basis. There is often a gap between local class support for a party and the capacity of any government to fulfill these aspirations at a state level. So A, C and D. The correct answer is this, okay. The term used to refer simple count of frequencies with which the various category in each set occur in data is referred to marginal. इसको हम क्या बोलते हैं, we call it a marginal। जो भी टर्म होता है वो सिंपल काउंट्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज में हम यूज़ करते हैं, है ना, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग सेट्स में उस डेटा को हम रेफर करते हैं एज अ मार्जिनल, वी कॉल इट एज अ मार्जिनल्स, ओके। देन who refers to the two useful concept in regard to community power structure, namely power pool and power dispersion। किसने रेफर किया है कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर्स को, दो पावर पूल और पावर डिस्पर्जन में, टी के ओमेन ने। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 775, दैट इज वी हैव टू अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। सो फर्स्ट क्या है हमारा, पावर और रेडिकल व्यू, राइट। सेकेंड इज द मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी,
Second is the model of democracy, third edition by David Held, right? Third is the political ideology and introduction, fifth edition Andrew Haywood, and the fourth one is understanding social movement, that is Greg Martin. So option number 1 is the correct answer for 106. Okay, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यहाँ पे जीएम क्रॉप्स की बात की है हमने, राइट? सो क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो रिड्यूस कर सकती हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, सो दैट इज़ द करेक्ट वन. टर्मिनेटर जीन जो प्लान करता है, मोसेंटो कंपनी वाज प्लान, इन्होंने यूज़ किया था जीएम क्रॉप्स में. देन जेनेटिकली जीएम क्रॉप्स जो होती हैं वो रेजिस्टेंट होती है कॉमनली एग्रीकल्चर हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड के लिए, और ये 3 जनरेशन पे नहीं होती है, जस्ट आफ्टर ये जो होता है ये फर्स्ट पे यूज़ हो जाता है. दैट्स द रीज़न कि ये टर्मिनेटर जीन वाला गलत हो गया, क्योंकि वो स्टरलाइज फर्स्ट जनरेशन पे ही हो जाता है, राइट? सो हियर वी आर हैविंग ऑप्शन नंबर 3 एज अ करेक्ट आंसर. नाउ in addition to feeding themselves, peasants use rest of the to produce and create 3 different fund. 3 different fund जो produce करते हैं वो कौन कौन से हैं? ceremonial fund, replacement fund and rent fund. These 3 funds are created. Okay, so option number 3 is the correct answer. अगर हम feeding अपने आप को feed करना है तो peasants जो हैं वो जो produce करते हैं 3 चीज़ों के लिए, एक ceremonial funds के लिए, एक replacement fund के लिए, एक rent fund के लिए. ठीक है, अब आता है चेंजिंग मटेरियल. तो चेंजिंग मटेरियल इज इम्पैक्टेड बाय, वो किस चीज़ से इम्पैक्ट होता है चेंजिंग मटेरियल? इंटीग्रेटेड ग्लोबल कैपिटल आइडेंटिटीज़ विच डिटरमाइन ग्लोबल इकोनॉमी एंड इन्फ्लुएंस ग्लोबल सोसाइटीज़, बिल्कुल भी नहीं. देन इंटीग्रेटेड ग्लोबल कैपिटल नेटवर्क हुज मूवमेंट एंड वेरिएबल लॉजिक डज नॉट डिटरमाइन इकोनॉमिक एंड इन्फ्लुएंस सोसाइटी, नो. Then integrated global capital marketing infrastructure whose functioning impact on various economies and influence society. So C is the correct answer. Then E is the correct answer. That is integrated global capital network whose movements and variable logic which determine economies and influence societies. So here we are having C and E is the correct answer for this. Okay, for the option 794. फैमिली एंड इंटीमेट रिलेशनशिप, फैमिली एंड इंटीमेट रिलेशनशिप को हमें वर्क जो है उनको ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, सो पहले क्या है, चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड बाय सी स्मार्ट, बी नील एंड ए वेट. ओके, देन वी कम फॉर दिस फैमिलीज इन टुडेज वर्ल्ड, डेविड चील, दैट इज द सेकेंड वन. Then rethinking family practices, David H.J. Morgan, that is the third one. This is the fourth one. Sociology of Life, Deborah Chambers, it is the fourth one. So here we are having fourth is the correct answer. Social structure that organize the residence and activities of people in physical space is known as. कौन सा सोशल स्ट्रक्चर है जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, रेजिडेंस जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं फिजिकल स्पेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ कम्युनिटी. व्हाट डू वी कॉल इट? हम उसे कम्युनिटी बुलाते हैं. ठीक है, 787 क्या है? द प्रीकेरिएट इज़ अ न्यू क्लास इन द मेकिंग. प्रीकेरिएट एक नई क्लास है. इट कंसिस्ट ऑफ दोज हु आर अनेबल टू गेन एक्सेस टू लेबर मार्केट. जो वो ऐसा है जो लेबर मार्केट में इसका एक्सेस नहीं लेते, विच ऑफर सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वेज. जो एक सिक्योर एम्प्लॉयमेंट डिसेंट वेज मिलता है, कौन सा इंक्लूड करता है उसमें? ओल्डर पीपल, अनस्किल्ड वर्कर्स, लेस क्वालिफाइड यंग पीपल, दोज हु रेगुलरली मूव इन आउट ऑफ अ वर्क. सो ऑल 4 आर इंक्लूडेड इन दिस. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. Here we talk about the authors and their books. C.W. Wright Mills की बुक है द पावर लाइट. डेविड राइसमैन की बुक है द लोनली क्राउड. द विलियम डॉमहॉफ की बुक है हू रूल्स अमेरिका. मैथ्यू जोसेफसन की बुक है रॉबर्ट बेबी. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. दिस इज द कोट नंबर 804. ओके, G.H. मीट का डिफाइन करता है आई एज द इनकैल्कुलेबल, अनप्रेडिक्टेबल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ. द फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन. किसको करता है? आई है इनकैल्कुलेबल, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. अनप्रेडिक्टेबल है, हमारा खुद का क्रिएटिव सेल्फ है, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर फॉर 730. 767 हमें अरेंज करना है रिसर्च को. ठीक है, कौन सा रिसर्च फर्स्ट होगा? हमें रिसर्च के प्रोजेक्ट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. सो फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट तो फॉर्मुलेट करेंगे रिसर्च की प्रॉब्लम को, राइट?
देन डेटा को टैबुलेट करेंगे, सिलेक्शन होगा हमारा सैम्पल का, दैट इज द थर्ड वन, राइट. देन no, wait. Yeah, first is our formulation of research problem, right. Second is the tabulation of data. Third is the sample, selection of sample. Then we will be coming for the, again I did the wrong one. What am I doing this with the research? Sorry. Yeah, what happened? First is the basic, this is the correct one, that the formulation of research problem is the first one. Second is the selection of the sample, second हम sample को select करते हैं, ठीक है. थर्ड हमारा इंटरव्यू स्केड्यूल होता है, ठीक है, थर्ड. देन फोर्थ है हमारा टैबुलेट करते हैं, जब इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया तो हम डेटा को टैबुलेट करेंगे, लास्ट में हम जो है वो रिपोर्ट लिखते हैं. सो दिस इज द फिफ्थ वन, ठीक है. ये है हमारा फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर. Who among the following is not associated with Chicago school? कौन एसोसिएट नहीं करता है? तो फर्डिनेंड टोनीज जो है वो एसोसिएट नहीं करते हैं शिकागो स्कूल से. रॉबर्ट पार्क, अर्नेस्ट बर्गस, लुई वर्थ, दे आर एसोसिएटेड विद द शिकागो स्कूल. ओके, सो हियर वी आर हैविंग थर्ड एज अ करेक्ट आंसर. 773 इज द रॉन्ग वन आई थिंक. क्या इसको हमें शायद चैलेंज करना है ना? यस, बिकॉज चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट जो एक्ट है वो हमारा आया है 1929 में, ठीक है. फिर प्रोविजन ऑफ फीमेल इन्फेक्टिसाइड एक्ट जो है वो 1870 का है. हिंदू गेम्स ऑफ लर्निंग एक्ट जो है वो हमारा 1930 का है. एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब का है? 1891 का है. बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट इज़ 1829. तो ये ऑर्डर हमारा देख लो, अगर आप ऑर्डर अरेंज करोगे तो ई बी डी ए और सी के ऑर्डर में आएगा, और यहाँ पे क्या है? ई डी बी ए सी. सो दिस इज़ अ रॉन्ग वन, दिस यू कैन चैलेंज. द क्वेश्चन आई डी इज़ 773. ओके, 773 इज़ द क्वेश्चन आई डी. आप इसको चैलेंज कर सकते हो, ठीक है. फिर क्या है? अ स्टेट एक्सप्रेसिंग इन अ वेरिएबल ज्योमेट्री द एग्रीगेट इंटरेस्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर इज कॉल्ड. जो भी स्टेट है जो एक्सप्रेस करता है वेरिएबल ज्योमेट्री, जो भी हमारा इंटरेस्ट है मेंबर, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर नेशन स्टेट. व्हाट डू वी कॉल इट? हम उसको सुपर नेशन स्टेट बुलाते हैं. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर 752. देन वी कम फॉर द 756. कैपिटलिज्म प्रोड्यूस वेस्टेड पॉपुलेशन, नॉट जस्ट द पुअर refugee but huge present population, and the other outsider who is associated with the statement is the Zygmunt Bauman. कौन relate करता है? Zygmunt Bauman से relate करते हैं statement से, that is 756. So which of the following risks is created by the globalization? This is the basic की spread of weapons of mass destruction होगा, population increase होगी, then international financial crisis and terrorism. So all these are the risks for the globalization. So A, B, C, D is the correct answer फॉर अ क्वेश्चन आई डी 785. पॉलीआर्क की जो टर्म है वो किसने यूज़ किया था? आर्य डेल ने यूज़ किया था 753. सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 753. 727. के मैनहिनियम स्टेट दैट द आइडिया इमर्ज फ्रॉम स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द सोशल वर्ल्ड. Therefore, ideas can be referred, हम उन आइडियाज़ को क्या बोल सकते हैं? They can be referred as inherently limited, one-sided and distorted. इनहेरेंटली लिमिटेड है, एक साइड में डिस्टॉर्टेड है. सो 727 और आंसर 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस. 777 मार्क्सन की जो डायलेक्टिक्स हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है? कौन से आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड है मार्क्स के जो डायलेक्टिक्स हैं? वो है डायलेक्टिकल एनालिसिस डज नॉट सी सिंपल वन वे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग वेरियस पार्ट ऑफ सोशल वर्ल्ड. देन डायलेक्टिकल एनालिसिस बेस्ड होते हैं सोशल वैल्यूज़, दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द सोशल फैक्ट. डायलेक्टिकल एनालिसिस फोकस करते हैं रिलेशनशिप विद इन और अमंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोशल वर्ल्ड. ओके, सो लास्ट वन इज द रॉन्ग. सो आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर 777. अरेंज द फॉलोइंग सोशोलॉजिकल वर्क इन अ मॉडर्निटी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन. सो फर्स्ट क्या है? फेसिंग अप द मॉडर्निटी, पीटर एल बर्जर इज द फर्स्ट वन. सेकेंड रिक सोसाइटी है towards a new modernity, Ulrich Beck is the second one. Then we are having consequences of modernity, Anthony Giddens third one, right? Then
लिक्विडिटी मॉडर्निटी जिगमेंट बॉमन्स की है लास्ट. Okay, so option number C is the correct answer in the chronological order, that is 768. Now, here we are having a list of good goals of good governance and how e-government can help. So, increasing transparency can help in disclosure of public asset, government budget and procurement information. Improving service delivery can reduce the cost of associated with travel for citizens to interact with the government. Empowerment of the people could providing a new channel to marginalized communities to receive government services, and reducing administrative corruption could lead to putting procedure online so that the transaction can easily be monitored. Okay, that is reducing administrative corruption. So here we can see that the fourth is the correct answer for the 830. अनूनिया ऑफ बनारस फ्ली फ्रॉम हिज विलेज. एक वो अपने विलेज से भाग गई है. शी हैज टेकन अ रिफ्यूजी टू हिज मदर ब्रदर और हिज वाइफ्स ब्रदर. वेयर ही इज़ इन ट्रबल इज इन हिज होम विलेज विद द डोमिनेंट लैंड ओनर्स. वहाँ पे वो ट्रबल है, उसको जो है वो भाग गया है वहाँ से. और वो कहाँ पहुँच गया? मदर ब्रदर अपनी वाइफ के ब्रदर क्या, राइट. सो ये क्यों हुआ? बिकॉज दे आर रिलेटेड फ्रॉम एफिनल टायर्स, दैट्स वाई this is a problem. So only option number 1 here for this question ID 796A is the correct answer. Okay, 742 distinction between culture and civilization can be recognized by distinguishing between material and non-material culture. So this is related to Weber. Okay, 742, that is the option number A. Who is not a spokesperson for cultural determinism? That is the R.M. McClever is not a spokesperson for cultural determinism. So it is 745. Now the thinkers and their books. So ये तो हमने कई बार डिस्कस किया है. मॉरलिटी दरखाइम से रिलेटेड है. फेटिसिज्म, कमोडिटी फेटिसिज्म, कार्ल मार्क्स, राइट. सो लेवी स्ट्रॉस जो है वो है आपका एलिमेंट्री स्ट्रक्चर. देन द माइकल फोकोल्ट इज फ्रॉम द डिस्कोर्स. So you have a question ID 797. The question number 1 is the correct one for 797. Here again the books and the authors. Ruling class is for the Ghetto Mosca. Political parties is for Robert Michael. Elites and societies is for T.B. Bottomore. And the mind in the society is for Wilfredo Perito. So here the second one is the correct answer for 806. Okay. Now which among the following is not true about the common property resources? कौन सा true नहीं है? So the second option is not true, that on the resources of some individual has an exclusively property right. This is not true. Rest all the statement are correct. So for 760 the option number 2 is the correct one. This is the correct because I can't see that this is not, so this is the correct one. This is the book and the author. American Dilemma and the Negro Problem of Modern Democracy is by the Gunnar Myrdal. Then American Soldiers is by the Samuel Stoffer, right. Then Middletown in Transition is by the Robert and Helen Lind. And Sexual Behavior of Human Male is by the Alfred Kinsey. So 805 we have a correct answer, that is the third one is the correct answer for this. Author in the book again. So Anne Oakley is for Sociology of Housework. T. Piketty is for the Capital in the 21st Century, the fourth one. Then M. Poy and C. F. Stable is for the Second Industrial Divide, Possibility and Prosperities. And K. Oman is for the so here I will write, okay, K. Oman is for the Borderless World, Power and Strategy in the Industrial Economy. Third is the correct answer for the option number 807. Important characteristic of estates क्या है हमारे? important characteristic estates से, that is each estate has in status. हर एक estate का status है. Each estate represent a broad division of labor. Then estate were in a political group. These all three are correct. And all state has equal status. This is a wrong statement. Okay. Again we are having this books and thinkers, that is for the question ID 814. Okay,
So here for 814 question ID, we have an option number 1 as correct. That is, this is an ID, okay, question ID. So that is virtual communities for the Howard Reingold, surveillance societies for David Line, personal communities is for Barry Wellman, and third wave is for the Elvin Toffler, okay. नॉट करेक्ट अबाउट द कंज्यूमरिज्म. कंज्यूमरिज्म के लिए ये गलत है. कौन सा? इट्स नॉट करेक्ट, बिल्कुल भी सही नहीं है. दैट इज द कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दिस इज रॉन्ग. सो 758 इज द थर्ड वन. ओके, सो दिस इज अ फ्रीक्वेंसी वेर यू हैव टू मेजर द मीन. आपको वेट दिया गया है 265 मील्स का. यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपको मीन निकालना है. सो द आंसर वाज 148. अकॉर्डिंग दिस इज द आईडी फॉर 735. सो द क्वेश्चन दैट इज 2. ओके, सो दिस इज करेक्ट. 810 दैट इज किया हाइपोथेसिस क्या होता है? अ प्लैनेट Earth itself should be seen as a living organism in which human and the other species and each have a vital part to play. Global commons क्या है? Resources shared by all members in the international community, that is resource global commons. Environmental deficit क्या है? A situation in which relationship to the environment and while yielding a short term beliefs benefits will have profound negative long term effects. Cultural ecology is a theoretical paradigm that explores the relationship of human culture and the physical environment. So that is the cultural ecology. Okay, so for 810 option number 1 is the correct answer. (755) Poverty exists because poor people serve very useful function for society. Who is associated with this statement? Herbert Gans is related with this statement. Okay, so 755, the option number 1 is the correct one. Which among the following is not a characteristic of indigenous knowledge? कौन सा नहीं है? That is the third one. Proper separation between nature and the culture is not the correct one. Rest all are the correct one. So 757, option number 3 is the correct answer. So here you have this comprehension. So for 141, the notion of modernity is closely associated with intensification of communication through mass media. So this is the correct answer for this, the notion for modernity. So you can read it, and then for the question ID, I'll give you the question ID. It's 821. The first one is the correct one. Okay, for 819, that is, as growth occurs in the primary urbanization and secondary urbanization, metropolitan urban centers and traditional literacy are transformed into professional intelligentsia. So 819, the third one is the correct one. Then for 820, the third one is the correct one. You can note it down, you can just check, because this is the correct which I have through it. Then for this 822, the correct answer is the 3. That characteristic of Sanskritization. So it has a contextual significance. It is a particularistic in origin, and it has been most widespread. You can just go through the para and you'll get its answers, because para was not tough. The process of urbanization should not be associated with forces of modernization, metropolitan urban center, that is unilaterally. It's for 145. 825, it was with what extension work was coupled during colonial period with coercive power. Coercive power के according work को जो है वो हम. Then by whom the strategy of improvement approach was implemented? 827, by British government. Okay, so the second one is the correct answer. Then we have this 826, how was the soil erosion prevented during colonial period? By the enforcement of administrative orders. Then the second last is 824, that was, what was the aim of improvement approach in the colonial period? To encourage them to grow only in certain specific crop. So for this, the second one is the correct answer. Now the 828, last one is, in what ways transformation approach to development was different from the improvement approach? So it attempt to establish new form of agriculture social organization.
So here we have a second one. Okay, so that's it for this paper. Apart from this, now we can see that now अब देखो जो मैंने एनालाइज किया है व्हाट वुड बी द कट ऑफ फॉर आर एग्जाम, दैट वुड बी अराउंड, देखो फॉर जनरल SC ST हम कट ऑफ देख लेते हैं, ठीक है। जो मेरा एनालिसिस है कि हमारा जो लास्ट तो देखोगे आप जनरल के लिए क्या था कट ऑफ कि 184 था नेट के लिए, ठीक है। और अगर GRF के लिए आप देखोगे सो दैट वाज अराउंड 210 GRF के लिए था, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे क्योंकि अगर हमारा जो कट ऑफ, क्योंकि लास्ट टाइम के पेपर के हिसाब से अभी का पेपर जो टफ था तो लो था, तो अगर हम जनरल के लिए देखेंगे तो क्या हो सकता है हमारा कट ऑफ, मोस्टली इट वुड बी प्रोबेबली फॉर 190 to 210 के बीच में ही होगा, ठीक है। सो ये आपका हो सकता है कट ऑफ, ठीक है। तो अब आप देखो 190 to 210 आपका हो सकता है JRF के लिए भी 210 तो इससे नीचे ही जाएगा, इट शुड बी 190 205 200 इतना ही स्कोर होगा क्योंकि बहुत कम स्कोर होगा। और नेट के लिए तो इट विल गो फॉर अगर आप देखोगे तो इट विल गो फॉर 175 to 185 तक ही ले लो आप, इट शुड बी गोइंग इन दैट बिटवीन ओनली, राइट। सो जनरल का, ठीक है। फिर अगर यही हम EWS का देखते हैं तो EWS का भी कुछ कैटेगरी है, तो देखो अगर 210 गया है GRF तो इस बार मान लो आपकी 200 जाएगा GRF, ठीक है, बिकॉज पेपर टफ था, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए भी हैं, ठीक है। और EWS के लिए भी हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि 166 165 ले लो आप, 175 के बीच में हो सकता है हमारा EWS, ठीक है। और अगर हम GRF के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आप देख लो कि 180 to 190 हो सकता है हमारा, ठीक है, GRF के लिए। अब अगर OBC और SC ST देखोगे तो क्या हो जाएगा, इट शुड बी, और आप 5-4 नंबर और कम कर लो उसको, ठीक है, इट शुड बी सेम क्योंकि पैरेलली होता है, हाँ, क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखोगे ना इट विल बी गोइंग फॉर 160 और 175 के बीच में ही ले लो अगर इसको अगर आप देखोगे, ठीक है। SC ST के लिए कम हो सकता है, ठीक है। फॉर SC and ST अगर आप देखोगे कि SC ST, क्योंकि आपने लास्ट टाइम देखा हमारा जो कट ऑफ था वो 150 था, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो 130 हो सकता है ये हमारे लिए नेट के लिए, ठीक है, नेट का हो सकता है 130 इनके लिए। और अगर हम देखेंगे कि 130 से 140 के बीच में इट विल कम फिर 130 and 1, तो 140 के बीच में हमारा नेट हो सकता है यहाँ पे। और अगर GRF ले लो तो आप यहाँ पे इट विल टेक अराउंड, आप इसको देख लो 150 to 160 इट विल बी अ GRF, ओके। तो मैं क्या करूँगी, ये तो मैंने जो ग्रुप्स में देख करा है, जितने बच्चों से बात किया उस हिसाब से आई हैव जस्ट गॉन थ्रू दिस, तो मुझे यही कट ऑफ समझ में आई है। बाकी वी कैन जस्ट पुट वन दैट ऑल्सो, हम एक उसको भी रख सकते हैं, क्विज डाल दूंगी, सो इन दैट यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट कि आपके कितना स्कोर बन रहा है, सो इन दैट वे वी कैन ऑल्सो गेस कि कितना हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी फ्रॉम ऑफिशियल कट ऑफ्स और अभी की कट ऑफ में क्या डिफरेंसेस हैं, ओके। So that's it for today. Thank you everyone. If you have liked this session, please let me know in the comment section. Yeah. So thank you. Have a good day.